I guess you can hear me now. There was some issue with the mic. Yep. Yeah, I guess you can hear me now. Okay, so let's go over it again. Uh, Assalamu alaikum, everybody. Thank you for joining and happy Ramzan to you all. We will be reviewing organic chemistry and, in particular, polymers today, and we will talk about other topics as well if you're finding them hard or any topic that, or any question that you want to discuss. Alright, so the first idea of what exactly polymer is, like where does it come from and what the definition is the idea that there's a small molecule which is a monomer, and monomer simply means one structure, and you can convert that to a polymer. Now, monomers come in two different kinds or two categories. One is the monomer that has a double bond in it. It is an unsaturated monomer. And if it is an unsaturated monomer, then when it bonds with itself, that's very important. It can bond with itself. And in that case, it will give us polymers that are addition polymers. And why is that? Because it has double bond, it is unsaturated, that double bond allows it to basically bond together. Assalamu alaikum, Aniya, Taimur, Saeed. Good to see you all here. Rabia, I will keep a class on moles soon. Hopefully this week as well. Hello, Hassan. Yeah, so if you have a double bond, that will give us addition reaction, because double bonds, alkenes, they do addition reaction. And the useful thing to remember about these monomers is that they bond with themselves. An example of that would be if I have ethene. That ethene has this double bond, and this double bond I can break and get a repeat structure for polyethene. Another way to remember addition polymers is that their name only changes by adding poly to whatever their actual name is. Like if it is ethene, it will be polyethene. If it is propene, it will be polypropene. Okay, so that poly part tells me that it is the alcohol and how it is forming. Yep. And then we have what we call condensation polymers. And condensation polymers are the ones that not necessarily have unsaturated situations. They have some functional group that you can remove. So it's a functional group that is removable or breakable, and that could be H, OH, NH2, many different categories of these, which you can break down and you can do condensation reaction on them. So one is addition reaction, which happens because you have double bond, and one is condensation reaction, which happens because you can remove functional groups. And these functional groups that have condensation reaction in them, they cannot just be one monomer. While it is possible to have just one monomer bond with itself, in these you can have more than one polymer. So for example, fats, they are condensation polymers. You react them, you make them by reacting two different things. One is an alcohol and one is a carboxylic acid. So those two things react together, and that is how you're able to get condensation polymers. So condensation polymers can be made from two or different monomers, and addition polymers can be made by just one monomer. So that's the first very basic idea of this thing. So I hope that part is clear. So we have two categories of polymers, both of them made from monomers. Monomers are small molecules that are joined together. Polymer is a large molecule that is made by joining them together. The two categories are addition. Addition polymers come from unsaturated, and condensation polymers, which come from removable functional groups. Alright, so now we'll go through these two categories in more detail.
So let's start with addition polymers. As I've told you, in addition polymers आपके पास double bond होना चाहिए. Yeah, some students are saying कि सिर्फ English में नहीं रखें. So alright, so I'll try to incorporate Urdu as well. ठीक है, बात समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं. Alright, so addition polymer क्या होता है? That you have double bond, and that double bond needs to be broken. Now any polymer that you get, उसके लिए हमारे पास एक मंत्र है, एक चीज़ है उसको याद करने के लिए, उसको हम बोलते हैं RCJ. RCJ means remove, copy, join. You just need to know कि remove क्या करना है. उसके बाद जो भी चीज़ बनेगी उसको कॉपी करना है, ज्वाइन कर देना है आपस में. अगर आपके पास एडिशन पॉलीमर है तो रिमूव डबल बॉन्ड. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज एडिशन पॉलीमर्स आर अनसैचुरेटेड, दे हैव डबल बॉन्ड. यू रिमूव दैट डबल बॉन्ड एंड यू विल गेट द रिपीट स्ट्रक्चर. ठीक है, सो रिमूव करने का मकसद ये है कि आपको मोनोमर से रिपीट यूनिट मिल जाए. उसके बाद ऑब्वियसली आप उसको कॉपी करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड यू गेट वट एवर पॉलीमर यू वॉन्टेड टू मेक. RCJ Temur. Yeah. So here's what you do. Let's suppose we start with that same example, ethene. ठीक है? So ethene में क्या है? आपके पास डबल बॉन्ड है. You know right away कि अगर इसके पॉलीमर्स बनेंगे तो एडिशन पॉलीमर बनेगा. ठीक है? अब आपने रिमूव क्या करना है? डबल बॉन्ड को रिमूव कर देना. रिमूव द डबल बॉन्ड. एंड हाउ डू यू डू दैट? Simply convert it to a single bond, right? So I just take this thing and remove the double bond. So that's all I did. I did not change anything, and that's what you will do. Do not change anything in there. ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास. अभी तक ये कोई compound नहीं है, ये बस एक हवा में चीज़ है. ओके, या एंड नाउ विल कॉपी दिस. ये जो चीज़ हमारे पास बन गई है इसको हम कॉपी कर लेंगे. सो जब हम इसको कॉपी करते हैं, सो वी मेक अ रिपीट यूनिट दैट इज अनदर वन. ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर आपसे कहता है that show 2 repeat units at least. So by copying it, you are making another repeat unit. अब हमने ये बना लिया. Now we'll join it. So join them by single bonds. और continuation वाली bonds भी बनानी है. These bonds, these are called continuation bonds. ये जो आपके पास ये बिल्कुल ends पे मैंने बनाई ना, ये red में highlight करती हैं. These are continuation bonds and these carry one mark. So whenever you make a polymer और आपने उसको join कर दिया, you have to make sure that you're doing this continuation bonds ताकि आपको polymer की structure सामने आ जाए. So here we go. Now sometimes, in fact, most of the teachers when we study this, हम कहते हैं कि यहाँ पे brackets भी लगा दो. Brackets लगाना या ना लगाना it's irrelevant, but the bonds बनाना ज़रूरी है. Okay, so remember this. Brackets examiner पहले 3-4 साल पहले वाले एग्जाम पेपर्स आप देखेंगे ना, मार्क्स शीट देखेंगे, उसमें ब्रैकेट्स मांगता था. लेकिन अब से उसने स्पेशली IGCSE की जितनी मार्क्स शीट्स आप देखेंगे, दे आर जस्ट सेइंग कि कंटिन्यूएशन बॉन्ड्स होने चाहिए. तो ये जो बॉन्ड साइड पे निकली है ये होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस पॉलीमर. अब इसमें हमें कैसे पता इसका नाम क्या होगा? एडिशन पॉलीमर है ना, डबल बॉन्ड रिमूव किया था, सो पॉली ईथीन. अब यहाँ पे एक और सवाल आता है दैट दिस इज नॉट अनसैचुरेटेड. इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, पॉलीमर तो बन गया बट डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो गया. वाई वी स्टिल कॉलिंग इट पॉली ईथीन? हम इसको ईथेन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज ईथेन से ये बना नहीं है. द पॉलीमर वट एवर द नेम इज, दिस नेम इज टेलिंग मी वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम, वॉट इट्स मोनोमर इज. तो इसका मोनोमर तो ईथीन है ना, ईथेन मोनोमर नहीं था. बिकॉज अगर ईथेन मोनोमर होता देन आई हैव एब्सोल्युटली नो वे ऑफ रिमूविंग द डबल बॉन्ड. वो है ही नहीं तो रिमूव कैसे करनी? एंड दैट्स वाई यू नीड टू नो दैट यू हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड, बट द नेम कॉपीज दैट. नेम टेल्स मी वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, कौन सा मोनोमर है जिससे ये बना है. ओके, आई रियली अप्रिशिएट दैट तैमूर. Secondly, whether you want to write N or not, that is irrelevant. It's totally your choice whether you want to do it or not. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है whether you do it or not. ठीक है? Alright, so I'm going to give you another example.
and then you will do couple of polymers. So I'm going to give you another one. Let's suppose we have this thing and I have chlorine here. A quick question here. How will I get chlorine here if I start with ethene? कौन सा रिएक्शन होगा जिससे मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा? Like I start with ethene and now I have chlorine in there. What reaction will that be? Actually, no, it's not addition reaction. What you have done is you have taken H out and you have added Cl in. एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ आई है ना, so इस वजह से this is substitution reaction. And secondly, additional reaction कुछ नहीं होता, addition reaction होता है, ठीक है? But this one is not addition. Huzaifa is right. This is substitution reaction because what you're doing is you are removing H and you're adding chlorine in there. Okay? And this thing is called vinyl chloride. This is not poly at the moment. This is simply vinyl chloride. इसमें polymer का नाम नहीं है. ठीक है? Now, a common question or misconception is कि सिर्फ एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं और एडिशन सिर्फ एल्कीन्स में होती है. ऐसा नहीं है. जो भी रिएक्शन आप पढ़ोगे ना, दे आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द बेसिक थिंग इज स्ट्रक्चर. इट्स नॉट कि अच्छा ये चीज़, जैसे इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं ना, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और सॉरी आयनिक बॉन्ड बनाता है, और नॉन मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. बट हमने एग्जांपल्स की हुई हैं, हमने वो एक्सेप्शंस की हुई हैं, स्पेशल केसेस जहाँ पर मेटल भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, हमने देखा था कि एल्यूमिनियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन आवर सिलेबस. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर मैटर करता है. अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्लोरीन के साथ. अब वो एल्कीन हो, एल्कोहल हो, एल्केन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो द डिफरेंस इज दैट यू आर टेकिंग वन थिंग आउट एंड रिमूविंग एंड एडिंग समथिंग इन प्लेस ऑफ दैट. तो अगर H की जगह क्लोरीन आ गया तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन है. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एल्कीन था, एल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक एसिड था या सिंपल एल्केन था. अच्छा, अब डबल बॉन्ड आ गई है तो एडिशन होगी. अब वो डबल बॉन्ड हो सकता है कि आपको एक ऐसी एल्कोहल मिल जाए जिसमें डबल बॉन्ड भी हो. अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जामिनर हमें दे सकते हैं, तो उसमें डबल बॉन्ड आ गई है तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है. ठीक है? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्ट्रक्चर. इट्स नॉट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट डू इट, द स्ट्रक्चर मैटर्स. जैसे हमने कंबशन रिएक्शन एल्केन्स में पढ़ा था, लेकिन हमें पता है एल्कीन्स भी बर्न करते हैं, एल्कोहल्स भी बर्न करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बर्न कर सकते हैं. ओके? The primary difference in substitution and addition reaction, as you've asked, Rabia. So the primary difference is that addition reactions are when you remove the double bond, you add two things on the carbons. Remove the double bond, add two things on the carbon. अब substitution में क्या है? You remove one atom or one group of atoms and you just substitute them. उनकी जगह पे दूसरी चीज़ आती है. So in substitution one carbon atom is involved. In addition two carbon atoms are involved. और double bond होना ज़रूरी है. So as Huzaifa said, substitution is replacing different atoms or group of atoms, and addition is obviously breaking the double bond, adding something to both carbons. Okay, I hope you understand that now. Now let's start this. So I have vinyl chloride and we'll do RCJ. What is RCJ? We will remove the double bond, and when you remove it you get this thing. अभी तक कि पॉलीमर बना नहीं है, इसलिए अभी इसके नाम में पॉली नहीं आएगा. I just took that thing, double bond break किया, and there you go. That's what we got. Now we'll copy it. So we'll copy it, and then we join them. ठीक है?
एंड देयर यू गो. नाउ दिस इज अ पॉलीमर, क्योंकि ये ज्वाइन हो गया है, ये बड़ा स्ट्रक्चर बन गया. नाउ विल कॉल इट poly, sorry about that, polyvinyl chloride. And you can draw the bracket if you want, you can write the N if you want, but both of those are optional. It's your choice whether you want to do it or not. Okay, just give me a minute. Some people are joining on Zoom. Let me share this link with them. Alright, so I really like that idea, RCB, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं RCB, remove copy and bond, and Royal Challengers Bangalore as well. So very creative, Taimur. Alright, so now you'll do an example. So I have this carbon and I've substituted all the hydrogen with fluorine. So now this one is tetrafluoroethene. So ethene because it has two carbons, ethene because there's double bond, tetrafluoro because char fluorine hai, and all of them are coming by substituting one after another. Alright, so go on and try to make a polymer from it. Alright, so check if your answer is the same. So we'll remove the double bond, so that gives me just single bond, and everything else remains the same, and then I just copy this part and join them, and yep, there you go. Now this thing is polytetrafluoroethene. Very good, Sarah. And Doyle, yeah. So this is now it is not ethine, it's ethene. And what's happening here is that this has another name which is called Teflon. Now these three are important because not only do you need to know how to make them, but you also need to know how to use them. What is their main use? So you need to remember that polythene is used to make plastic bags. Although plastic bags, we should discourage the use of those things as much as we can, especially for one-use plastics, because of the environmental issues and they cause pollution and they're difficult to discard, all of that. And so polythene, that is used to make plastic bags. Polyvinyl chloride used to make pipes, or Teflon is used to make non-stick pans. तो non-stick pans के ऊपर एक काली सी coating होती है ना, so that is Teflon basically. So अगर आप उसको वो जो metal mesh होती है उससे अगर आप उसे साफ़ करते हैं तो वो फिर coating उतर जाती है, तो it stops being non-stick. So it's important to remember Teflon. Some shoes also use it, सोल में यूज़ करते हैं इसको, शूज़ के सोल में. लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेन यूज़ उसने याद करने को बोला हुआ है वो टेफ्लॉन का नॉन स्टिक पैंस वाला है. पॉलीथीन को आपने ये नहीं लिखना कि शॉपर बनाने में यूज़ करते हैं. आई हैव सीन दैट इन एग्जाम्स. शॉपर वो बंदा होता है जो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है. इट्स शॉपिंग बैग.
जो इससे बना लें। आपको डायरेक्टली ईथीन देगा ही नहीं, एग्जामिनर आपको एक इस तरह का मॉलिक्यूल देगा जिसमें आपको ईथीन वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे कहता है कि वी हैव दिस कॉम्पाउंड, और एग्जामिनर कहता है कि इसको अब आप नाउ दिस इज राइट, एग्जामिनर सेज इसकी पॉलीमराइजेशन करके दें। अब इसकी पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, और हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए देखना क्या है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज टू ऑलवेज ब्रिंग द मोनोमर इनटू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। डबल बॉन्ड मिडल में होगी, दोनों कार्बन साइड पे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, एंड द अदर 4 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस। तो इसका मतलब हमें इसको रोटेट करना है। थोड़ा सा रोटेशन के लिए आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर इमेजिनेशन नहीं भी यूज़ करनी, जस्ट रोटेट द पेपर, इट्स ऑन द पेपर, रोटेट को उसको थोड़ा सा रोटेट करो, आपको नज़र आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। नोटिस व्हाट आई डिड, आई कॉम्पैक्टेड एवरीथिंग एल्स बिकॉज द ओनली थिंग आई एम कंसर्न्ड विद एट द मोमेंट इज दिस डबल बॉन्ड, कि मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। Once it is in the standard form, then the thing is easy. Okay? Examiner ने आपको molecule दिया with double bond. Okay, Rabia, we'll get the molecule with the double bond, and then we will make polymer from that. All right? No, it's not rotational symmetry. You just need to copy that thing. Just combine this, so this whole thing becomes CH3 and this whole thing becomes OH, and you just put them there. Notice that when I wrote it, I wrote O with carbon. मैंने H को कार्बन से ज्वाइन नहीं किया है जब यहाँ पे मैंने उसको लिखा है। The reason is that it is O that's joined with carbon. Although you won't lose marks because this is just O levels IGCSE, इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाएगा, but still this is good chemistry that you need to, this practice you need to follow that. Alright, so now what we'll do, we know the method, RCJ. We'll break the double bond, copy everything that's there, okay, so we've copied it, we've made repeat units, now we'll join them, and there you go, that's my polymer. You can put the bracket, you can put the N if you want, and there you go, we have made it. Yep. So again, let me repeat, हमने क्या करना है, we take the double bond and bring it to the center, we make sure it's in the standard form. Standard form क्या है, you have double bond in the center and whatever is inside इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को आना चाहिए। यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए आपके पास, यहाँ पर जो कुछ भी आपने ऐसे उसे लिख देना है। देन यू जस्ट डू द RCJ मेथड। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एज सच हमें उसने बताया नहीं है, लेकिन अगर हमें इसका नाम पता है, हमें उसका नाम पता है। सो what you have to remember is that if you can name the monomer, you can name the polymer because you just have to add poly to the name. So अब इसके monomer का नाम क्या है, monomer को नाम कर लेते हैं। You have 3 carbons in the long chain, 1 2 3, so it is prop। और उसके फर्स्ट कार्बन पर 2 चीज़ें, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप भी है। सो इसको हम बोलेंगे prop 1 इन 1 ओल। अभी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको ओ लेवल्स में IGCSE में वो इस तरह के नाम बोलने का नहीं कहेगा। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते, इसका एक और नाम भी हो सकता है, हम इसको बोल सकते हैं prop 1 इन, तो ये है, और 1 हाइड्रोक्सी भी है, बिकॉज OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। सो अगर आपको उसने नाम दे दिया, लेट सपोज वो आपको बोलता है दिस इज 1 हाइड्रोक्सी prop 1 इन, इसके पॉलीमर का नाम क्या होगा, just add poly to the name, so it will be poly 1 hydroxy prop 1 ene. So this is an example in which you will not be asked to name the thing because आपने इस तरह की नेमिंग पढ़ी नहीं हुई। हाँ, आपको ब्रेक डाउन करना तो आता है, you understand what ene is, you understand what hydroxy is, you understand what prop is, you understand why 1 is there because it's on the first carbon, लेकिन वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि इसका नाम बना के दो।
हाँ वो आपको पॉलीमर का नाम ज़रूर पूछ सकता है, बिकॉज यू नो दैट फॉर एडिशन पॉलीमर्स यू जस्ट ऐड पॉली टू whatever the thing is. I'm going to give you another example and this time you will do it. So I have this thing. Go on. Make its addition polymer. And the first step, obviously, you have to bring it to the standard form. Go on, try it out. Rabia, you just have to bring it to the standard form where you have carbons and double bond in the middle, and everything else is on the side. Yes, exactly. Very well explained, Hassan. I know this is confusing. But that's the thing, हमें एक दफ़ा समझ आ जाएगा, then we will know how to solve it in the exam. So examiner won't be able to trick us. Alright, so one more minute, people. I'll explain अगर नहीं समझ आई. Alright, so here's what we do. सबसे पहले you take this thing, आपको double bond पे focus करना है. So what I'll do is I'll try to combine everything that's on the side. So ये मेरे पास double bond है यहाँ middle में. Now what is on the right side of this double bond? CH3. So I just put that. What is on the left side? CH3. ठीक है, नोटिस दैट लेफ्ट साइड पर मैंने उसे उल्टा लिखा बिकॉज इट्स कार्बन दैट्स जॉइंट. ठीक है, अच्छा. एंड ऑन दिस साइड आई हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, सो मैं इसको COOH लिख देता हूँ. एंड ऑन दिस साइड आई हैव क्लोरीन, सो मैं क्लोरीन लिख देता हूँ. Maniha, this is carboxylic, not alcohol. So now I have kind of broken it down and formed it into the standard form. And now what I'll do is I'll take this thing और मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ. Okay, so this thing I will try to rotate it. I'm not sure if I can rotate it here. So what I'll do is I'll just copy this one. Now I'm going to bring it in the standard form. Standard form is you make sure you have carbons aligned like this. Double bond center में होना चाहिए. This is the standard form. This is what we are looking for. And everything on the sides. Okay, so this is the standard form. Now just put whatever you have. So this one, the right carbon has two CH3s. So यहाँ पे भी CH3 लिख दो, यहाँ पे भी CH3 लिख दो. The other carbon जो हमारे लेफ्ट पे होगा उसके एक साइड पे COOH है, वो लिख दो, और एक साइड पे क्लोरीन है, वो लिख दो. और हम अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एग्जाम में भी समझ आ जाएगी. हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. ओके, या आई नो. सो नाउ वी हैव इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब क्या करना है, अब इसको RCJ मेथड, जस्ट ब्रेक द डबल बॉन्ड. Now you have the repeat unit, copy it, and just join it, and that's your polymer. जो हमारा मॉक एग्ज़ाम था इस सैटरडे को जो हुआ था, लास्ट सैटरडे, उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस यूजिंग पॉलीलैक्टिक एसिड. ठीक है, सो गो ओवर योर सोल्यूशंस. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो टू द सोल्यूशन एज वेल.
तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हो दैट दिस इज व्हाट वी डिड इन दैट. ओके, सो दिस इज एडिशन पॉलीमर्स. इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. क्या क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल क्वेश्चंस. वो आपको बोलेगा मोनोमर है, पॉलीमर बना दो. मोनोमर का नाम देगा, पॉलीमर का नाम दे दो. जैसे इस मोनोमर का नाम वो बता देता है आपको. लेट्स सपोज मैं आपको बोल देता हूँ दैट दिस थिंग, इट्स पॉलीमर्स नेम इज पॉली. नाउ लेट मी थिंक ऑफ इसका नाम क्या होगा. सो लॉन्ग चेन हैज प्रॉप, सो दिस इज प्रॉप. So this is 1 chloro, 2 sorry not 1 chloro, 2 chloro, 2 chloro, 3 methyl prop bute, sorry, bute 2-enoic acid. अब अगेन नाम से घबराना नहीं है, बिकॉज ये उसने आपको दे देना है, आपसे नहीं बोलना कि ये नाम बना के दो. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इट्स मोनोमर. अगर वो आपको नाम दे देता है और आपसे कहते हैं इसका मोनोमर बताओ, सो व्हाट इज द मोनोमर. इट्स सिंपली रिमूव द पॉली पार्ट एंड दैट्स योर मोनोमर. ओके, Said you can write COOH as CO2H. That's fine. उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है. Alright. So this is the polymer. तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मोनोमर देगा और वो आपसे कहेगा इसका पॉलीमर बना दो. दूसरा वो आपसे कहेगा कि मोनोमर का नाम बता दो या पॉलीमर का नाम बता दो. थर्ड, दे कैन आस्क यू. अब यहाँ पर ये जो मैंने बॉन्ड बनाई है ना, इसमें व्हाट आई डिड इज आई जॉइंड एवरीथिंग. मैंने CH3 को खोल के नहीं लिखा है, आई जस्ट कंबाइंड इट एज CH3. मैंने उसको इस तरह से बॉन्ड सारी नहीं बनाई है उसकी. यू हैव टू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन. इफ द क्वेश्चन सेज शोइंग ऑल बॉन्ड्स, देन यू हैव टू ओपन इट अप. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो आपसे कहता है कि शोइंग ऑल बॉन्ड्स, तो आपने वो बॉन्ड सारी बनानी है. और हम येस यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स वंस यू हैव मेड द पॉलीमर. उसके बाद आप ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं, लाइक COOH नीचे लिख दें, Cl ऊपर कर दें, दैट्स फाइन. लेकिन ये नहीं कर सकते कि जिस कार्बन के साथ COOH और Cl था उसके साथ CH3 लगा दो. यू हैव टू पे अटेंशन टू विच कार्बन इज अटैच टू विच ग्रुप्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. बट या इन द पॉलीमर यू कैन स्विच देयर पोजिशन. मोनोमर में पोजिशन स्विच ना करना. मोनोमर जो उसने दिया है वैसे ही रखना. ओके, दैट्स फॉर रीजंस विल स्टडी इन A-levels. बट मोनोमर में जैसा उसने आपको बताया है, keep it like that. Alright, so that's addition polymerization. I hope everybody understands this. Sorry, I was going over the type of questions. Fourth question होता है uses and problems. So uses इनके हमें पता है that polythene is used for shopping bags or plastic bags, PVC is used for pipes, and Teflon is used for non-stick pans. और problems क्या हैं? They're difficult to discard. If you burn them, they can give you toxic fumes, poisonous fumes. If you have, especially if you have chlorine or bromine or anything like that in them. Similarly, if you try to fill the landfill sites with them, तो वहाँ पर भी obviously you have limited space. So pollution के issues इसके साथ there are abound, and that is why you need to minimize the uses of these and be responsible when it comes to using these things. Alright, so that is our addition polymers. Now let's move on to condensation polymers, which many students struggle with as well. Lekin inshallah not after today. So condensation polymers, let's go over that. Condensation reaction क्या है? Condensation reaction is you remove two things, two simple groups from carbon atoms और वो आपने ज्वाइन कर देना. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ से आप रिमूव करोगे. सो यू टेक टू मॉलिक्यूल्स, यू रिमूव समथिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड देन यू कॉपी एंड जॉइन. सो इसमें और एडिशन में फ़र्क क्या है? इन एडिशन यू टुक द सेम मॉलिक्यूल, यू रिमूव द डबल बॉन्ड. इन दिस वन यू आर टेकिंग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, यू आर रिमूविंग स्मॉल ग्रुप्स. अच्छा, दिस वन विल गिव यू अ बाय प्रोडक्ट. एडिशन रिएक्शन में एक ही चीज़ बनती है,
कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाद में करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इन दिस वन यू विल गेट अनदर बाय प्रोडक्ट जिसको हो सकता है आपको, या दिस वाज द वन इन केस यू वांट टू सी. सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में वो आपको कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट मिलेगा. दैट बाय प्रोडक्ट कुड बी HCl, दैट बाय प्रोडक्ट कुड बी NH3, दैट बाय प्रोडक्ट कुड बी वाटर. मेनली इट्स वाटर इन आवर सिलेबस. एंड देन ऑब्वियसली आपको वो रिमूव करना है. यू कैन डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यू कैन डू फिल्ट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली पॉलीमर तो आपका सॉलिड होगा. अब दूसरी चीज़ आपकी क्या है, वो HCl है, H2O है, अमोनिया है, उसको आपने कलेक्ट कैसे करना है, वो सारा हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं. Alright, so in condensation you just need to focus on what you need to remove. So in addition polymers you remove the double bond. Alright, in condensation polymers you remove a small byproduct, a small molecule that is made from that. Alright, so let's go over this. Yes Hassan, you're absolutely right. Okay, so अब कंडेंसेशन में आपको देखना है कि हम वाटर कहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वाटर, राइट. सो हमने वाटर कहाँ से बनाना है, H and OH, that's what we have to remove. So just focus on where you can find H and where you can find OH. अब हमारे सिलेबस में we have seen OH, we have seen COOH and we have seen NH2. These are the three main functional groups जिनमें से हम H और OH निकालते हैं. You have to pay attention. आप मीथेन में से H नहीं निकाल सकते. क्यों? There is a term of called polarity. Polarity is when you have slightly unbalanced covalent bond. अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास जितनी भी हाइड्रोजन को आपने रिमूव करना है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम पोलर बॉन्ड्स. ठीक है, वो कार्बन के साथ पोलर नहीं होती है. वन वे टू रिमेंबर कि कहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, यू विल नोटिस, एंड अगेन दिस इज़ नॉट इन स्ट्रिक्टली इन योर सिलेबस, बट यू कैन रिमूव दैम इफ़ यू हैव FONCl. These are the four जहाँ से जिसके साथ H लगा होगा तो आप बड़े आराम से उसे रिमूव कर सकते हैं. ओके, कार्बन के साथ नहीं रिमूव कर सकते. एंड अगेन दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस, सो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग इफ यू वांट टू रिमेंबर दैट. कार्बन के साथ लगा हुआ H आप रिमूव नहीं कर सकते. इफ यू आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन दैट, कार्बन के साथ लगा हुआ H आप रिमूव नहीं कर सकते. हाँ, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा, हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, बट आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस. ओके, ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल, अगर आपने पढ़ा हुआ है, देन पोलैरिटी इज़ द वर्ड दैट यू विल गूगल इफ़ यू वांट टू. बट एक महीना रह गया एग्जाम में, जस्ट फोकस ऑन whatever is in the syllabus and whatever you need to remember. So one thing to take away, you cannot remove hydrogen from carbon. Okay, so अब यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं. That means मैं यहाँ से H को रिमूव कर सकता हूँ. अगर OH नज़र आ रहा है, you can remove H. You can remove both O and H. Acid नज़र आ रहा है, you can remove H. You can remove OH. Not the two OH, this OH. NH2 में से you can remove just one H. ठीक है, बिकॉज आपको H ही चाहिए ना, H या OH चाहिए. OH तो इससे मिलने नहीं लगा, तो H ही रिमूव आप कर सकते हैं. अब इनको हम बोलते क्या हैं? दिस इज अल्कोहल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑब्वियसली, एंड दिस इज द एमाइन ग्रुप. तो आपके पास तीन तरह के मोनोमर्स आ जाएंगे. एक वो जिनमें अल्कोहल है, एक वो जिसमें कार्बोक्सिलिक है, एक वो जिसमें एमाइन है, और एक और आता है जिसमें एमाइन भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, और उसको हम बोलते हैं एमाइनो एसिड. तो उसमें क्या होगा, उसके एक साइड पे एमाइन ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. दैट्स इट. सो अमाइनो एसिड इज द वन इन विच यू हैव बोथ ऑफ दीज. एंड व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस? यू जस्ट नीड टू नो दैट यू आर गोइंग टू रिमूव AH एंड OH फ्रॉम दैम. ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर. अब अगली चीज़ कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आ जाती है कि हाउ कैन यू मेक देम. सो उनको बनाने के लिए मैंने आपको बताया RCJ. So just identify where you remove H from, where you remove OH from, and then you just join those things, copy and join. ठीक है? So we're going to do a couple of examples. I have this compound. इसके दोनों sides पे OH है. So what will I call this thing? This is ol because it has OH, and diol because it has two OH. So it's going to be diol. ठीक है?
हाँ, इसका नाम फर्दर हम बना सकते हैं और एग्जामिनर हमसे नाम पूछेगा नहीं अगेन, बिकॉज इसका नाम हमसे वो पूछेगा नहीं, बट इसका नाम है Eth12 डायोल। वो आपको नाम बता दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज Eth12 डायोल। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको लेट सपोज पॉलीमराइज करना है, ओके। नाउ आई वांट टू पॉलीमराइज दिस, और मेरे पास यही चीज़ है, तो आई वांट टू गेट H and OH, राइट हसन, दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। सो आई नीड टू गेट H and OH। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी एक साइड से H रिमूव कर देता हूँ, दूसरी साइड से OH रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक वाटर फ्रॉम दिस थिंग, राइट। सो दैट्स व्हाट आई विल डू। सो वंस यू हैव रिमूव्ड दिस, जो भी चीज़ बची है उसको कॉपी कर लें, रिमूव कॉपी जॉइन, यही हमारा तरीका है ना। सो जस्ट कॉपी वट एवर इज लेफ्ट ओवर। सो आई विल सी दैट आई हैव दिस थिंग लेफ्ट ओवर, right? I removed H, I removed OH, this is all I have. So what was the second step? Copy. हमने एक और कॉपी कर दिया, and third step join, हमने इसको join कर दिया, and there you go, we have made the polymer. अब हमारे पास ये जो पॉलीमर आया है, this is a condensation polymer. अब आपने याद क्या करना है कि condensation polymers में what do you get? You get a byproduct water, and you also get what we call linkage. This right now, again इसका नाम आपके syllabus में नहीं है, this is called ether linkage. What you have to remember is it is present in carbohydrates. So whenever you have diols, you can make carbohydrates from them. हाँ, not all carbohydrates are made from Eth12 diol. कोई और भी monomers हो सकते हैं और होते हैं, simple sugars बोलते हैं उनको. Those simple sugars, you join them by removing water, you get carbohydrates. अब इसको reverse भी कर सकते हैं. You can reverse all the condensation polymers very easily. And what you do for that is, अगर मुझे इसे reverse करना है, I'll add water to it obviously, because मैंने water remove किया था तो water ही add करूँगा, and I will need acid catalyst. So with acid catalyst, water, I can convert a condensation polymer back to its monomer. तो अगर मेरे पास carbohydrate है, I can make sugar from it by just adding water and acid catalyst. For different reactions we use different acids, but for example हमारी digestion के लिए we use HCl in our body, right? And we use many different catalysts, enzymes for that. अब उसकी क्या ज़रूरत है? Because this reaction works better if you heat it. हमारी body का temperature तो बहुत थोड़ा सा है, it's 37 degrees Celsius for healthy people. So we cannot heat a person कि खाना खाया तो अब इसको heat कर दो पकड़ के. So our body creates these enzymes. Those enzymes help reduce the activation energy. So हमें heat के बगैर ही हमारी body में carbohydrates break down हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने lab में करना है, you will have to heat it. Alright, so there you go. So we have acid catalyst, heat, water, and you can reverse this thing. Okay. Alright, let's try one more. I'll keep it here in case you are copying this. So in this case, I have this thing with OH on both sides, carboxylic acid on both sides, and I'm going to use the same जो अभी हमने बनाया था ना, I'm going to keep that as well. अब the problem with these things is कि students get confused with large size of the molecule, but again you have to identify remove copy join वाला part. You have to identify कि मैंने remove क्या करना है, मैंने copy क्या करना है और मैंने join क्या करना है. और paper जो है ना वो आपका है, आपने उसके पैसे भरे हैं, so आप उस paper पर लिख सकते हैं that ये मैंने remove कर दिया भाई, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये मैंने रिमूव कर दिया. आप ये एग्ज़ाम में कर सकते हैं, वेदर इट्स MCQs, वेदर इट्स पेपर वो थ्योरी वाला पेपर, यू कैन डू इट एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम डूइंग दिस इफ इट हेल्प्स यू आउट.
पेंसिल पकड़ें, इस तरह लाइंस लगा दें ताकि आपको पता हो ये रिमूव हो गया. सही. नाउ आई जस्ट कॉपी दिस पार्ट, जो भी बच गया आई विल कॉपी दैट. सो ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास ये क्या बचा है, ओ सी डबल बॉन्ड्स, ओ देन कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे एंड देन सी डबल ओ. ओके, एक ये बन गया, एक वो चीज़ आ गई. ठीक है, ये लें जी, योर repeat unit is prepared. And now what you do, copy this thing again. repeat unit बन गया ना, copy this. So इसको पूरे को पकड़ें and just copy it. So left side से start करते हैं and yeah, I'm just copying this thing and now I'll join it and this is my polymer. Done. Remove, copy, join. That's our method. हमने ये remove कर दिया, copy कर दिया, join कर दिया. Now what kind of linkage it has? Ester linkage, very good. Okay, and this ester linkage is present in pterylene and in fats. Pterylene कैसे बनती है? You take dicarboxylic because आपको दो साइड से H भी निकालना है and diol because दो साइड से OH निकालना है. ओके, एंड फैट्स कहाँ से बनते हैं? यू टेक एसिड की जगह पे यू टेक फैटी एसिड एंड अल्कोहल की जगह पे ग्लिसरॉल. नोटिस दिस ओल पार्ट, दैट्स टेलिंग मी इट्स अल्कोहल. नोटिस दिस एसिड पार्ट, दैट्स टेलिंग मी इट्स एसिड ऑन बोथ साइड्स. ओके, so you have to remember what to remove. So what do you remove? You remove H and OH. Rabbi, your question is why did we remove H and OH? हमें water बनाना था, so that's why I removed H from any one and OH from any other one. It doesn't matter whether you do it like this. आप यहाँ पर H किसी और से और OH किसी और से भी remove कर सकते हो. What if I did this? मैं H यहाँ से remove करता हूँ, OH यहाँ से remove करता हूँ. Still I'll get the same thing. Okay, so that is the idea. You are going to remove H and OH and that will give you the polymer, and this polymer can either be pterylene if it is man-made or fat or if it is natural, और उनके monomers आपके सामने. अब एग्जामिनर आपसे कहते हैं इसको रिवर्स कर दो, तो आप रिवर्स कैसे करेंगे? तो you just have to remember to break it from the linkage. जैसे जब हमारे पास ये था तो हमने लिंकेज से ब्रेक करना है ना, तो मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ इसको. तो मेरे पास जब यहाँ से मैंने ब्रेक किया तो ये मेरे पास एक रिपीट यूनिट बन गया, ये मेरे पास एक रिपीट यूनिट बन गया. अब इसमें वाटर डाल दो. पेरेंट्स गाइस, आई वांट टू रिवर्स दिस, राइट? सो आई विल टेक दिस थिंग, आई विल ब्रेक इट फ्रॉम द लिंकेज एंड देन आई विल ऐड एच एंड ओ एच. क्योंकि मैंने रिमूव भी एच एंड ओ एच किया था. सो आई विल जस्ट टेक दिस थिंग. Notice that this is what I get when I break it down, right? तो अब मैं एक साइड पे H डाल देता हूँ, दूसरी साइड पे OH डाल देता हूँ, मेरा मोनोमर तैयार है. अच्छा, let's do it again with the other one. इसमें वो हमसे कहते हैं ये पॉलीमर बना दिया, इसका मोनोमर बना के दो. Break it from the linkage. अब ये एक्स्ट्रा लिंकेज है, आपकी मर्जी है आप यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो, योर चॉइस. ठीक है? सो इन एडिशन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, तो जब रिवर्स करना है तो डबल बॉन्ड ऐड कर देनी है. यहाँ पर यू टुक एच एंड ओ एच आउट, सो अब आपने एच एंड ओ एच ही वापस डालना है. सो लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करता हूँ. ठीक है, तो जस्ट टेक द लेफ्ट थिंग आउट. इसके लेफ्ट में जितना कुछ है ना मैं सारा कॉपी करने लगा हूँ. मैंने ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन किया है, ये सारा उठा लिया. सो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, उसके राइट साइड वाला भी उठा लेते हैं. तो राइट साइड पे ये पूरा पार्ट है, ऑक्सीजन के साथ तोड़े हैं ना, सो ऑक्सीजन के साथ वाला ये पूरा पार्ट उठा लेते हैं. सो दिस, इट्स ऑल अबाउट जस्ट कॉपिंग है. अब हमने ऐड करना है एच एंड ओ एच, तो एक साइड पर एच ऐड कर देते हैं, दूसरी साइड पर ओ एच ऐड कर देते हैं, एंड देयर यू गो, दोज आर आवर मोनोमर्स. ओके, so you just have to make sure where to break the linkage from, and then you add H and OH. All right, that's what you do. Let me give you another example that you will solve. I'm going to give you this example to solve.
All right, so I have now this time just for simplicity I'm going to use some boxes. तो मेरे पास ये बॉक्स है, इसके साथ इधर डाई कार बॉक्स लेके, and then I have this another box, and this one is a shaded box, and I have OH on both sides, and I want to polymerize it. So remember the method. Rabia, just bear with me. We are doing another example. You will understand, inshallah. So what do you have to do? You have to remove H and OH. That's all. Identify आपने H कहाँ से remove करना है, आपने OH कहाँ से remove करना है. That's the key here. So tell me, H कहाँ से remove करना है? Number 1 से या number 2 से? Tell me, कहाँ से remove करें? Okay, so alright, so we can remove OH from number 1. Okay, so H from alcohol, जैसे आप लोग कह रहे हैं. Alright, so let's do it. So I'm going to remove H from this thing, so I've removed that, and OH from this thing, I'm going to remove that. Okay, so remove हो गया. H from one side, OH from the other side. We have removed it. And now we just have to copy these parts, join them. So whatever is left, I'll copy that. So मेरे पास यहाँ पर ये बच गया है और वहाँ पर ये बच गया है, and I'll just copy them. बना दिया, right? So I just copied them, and this is my repeat unit. And now I'll just take this thing, आगे इसी को बना लेते हैं. And join them, and my polymer is ready, right? If I want to reverse it, what will I have to do? Acid, water, heat. तो कहाँ से acid, water, heat करना है? Now, how do you know where to remove OH and H from is totally your choice. अगर OH remove हो रहा है कर दो, दूसरी साइड से H कर लो. Right? So this one right now is terylene, because you got a dicarboxylic, you got a diol and you made it. अगर आपके पास fatty acids और glycerol होता तो it would have been fat, but method यही होता. ठीक है, अब इसको मैं reverse करने लगा. So I have to break it down and convert it back to its monomers. So here's what I'm going to do. I'm going to break the linkage. लिंकेज कौन सी है? एस्टर लिंकेज. कहाँ से पता है? दिस वन, दिस इज एस्टर लिंकेज. सो हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम ब्रेक इट डाउन अगेन. वी कैन यूज HCl और डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मोनोमर इज वी यूज डिफरेंट एसिड्स. आपसे वो नाम नहीं पूछेगा, यू जस्ट नीड टू नो एसिड विद वाटर. एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको. ऑलराइट, सो हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू ब्रेक इट फ्रॉम द ऑक्सीजन. सो यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया. सो देयर यू गो. मेरे पास एक मेरा मोनोमर बन गया ये मेटल वाला, ऑक्सीजन विद द शेडेड बॉक्स एंड O, और एक मेरे पास वो दूसरी चीज़ आ गई है. ऑलराइट, राइट, एंड देन आई कैन ऐड H एंड OH. सो यहाँ पर मैं H डाल देता हूँ, यहाँ पे OH नहीं डाल सकता बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी देयर, एंड यहाँ पे मैं OH ऐड कर देता हूँ, एंड देयर यू गो, इट्स रेडी. My monomers are these. Yes, you're right, we can use sulfuric acid as well. Now what are these boxes? This box is anything that is not taking part in the reaction. जैसे हमारे पास अगर हम पिछले एग्जाम्पल को देखें ना, तो in this example we had this portion which was not taking part in the reaction, or we had this portion which was not taking part in the reaction. तो उसको एग्जामिनर बॉक्स बना सकता है, या उसको एग्जामिनर इस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको बॉन्ड साइड दिखा देगा, बट इट्स नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. सो फॉर आवर पर्पस इट्स यूजलेस. हमने बस उसको वहाँ पे रखना है. सो येस,
for simplicity we just use boxes. Yes, you're right. Okay, so now we're going to do another one in which we'll use amine. So again, I have a monomer, and this is my monomer. And this is diamine. Why diamine? Because it has amine group. It doesn't have to be same thing. Shaded and unshaded can be different, but for our purpose, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो shaded है या unshaded है. It's not taking part in the reaction, okay? And this one I'm going to react with carboxylic acid, dicarboxylic acid. And now let's see what we'll get. We have to remove H and OH. All right. It doesn't matter whether the carbon is more than 10 or not. It's up to the examiner, because examiner can give us a box or these atoms in the middle. हमने फोकस करना है कि H और OH कहाँ से रिमूव होता है. वो जहाँ से भी रिमूव हो सकता है, हमने उसको करके उसको ज्वाइन कर देना. Alright, everything else remains the same. We are not going to use that. हमारा उसको काम ही कोई नहीं है, उसने रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना. Right? So now let's do it. हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से H निकाल देते हैं. We cannot remove OH from here, right? We cannot do that because OH है नहीं यहाँ पे. We just have H, so we'll take that. And from the other one, we'll remove OH. So we remove that. अब हमने रिमूव कर दिया, H और OH रिमूव कर दिया, वाटर बन गया होगा, और डबल वाटर बनेगा. जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके डबल वाटर बनेगा, क्योंकि हर एक से दो दो H निकल रहे हैं, दो दो OH निकल रहे हैं, तो दो वाटर बनेंगे. And now we are going to join them. Rabia, I'll come back to that. I'll take another example and come back to that. Don't worry. Alright. So now what I'm going to do is I'm going to copy this part. I have removed H and OH. Alright. So focus on this one, guys. So now I'll just take this part. Sorry. I'll just take this part. I have NH, NH. And that one is COO, double bond O. You just have to copy it. ठीक है? Join it. ये मेरे पास एक repeat unit बन गया. Alright? Again, रट्टे नहीं मारें कि अच्छा amine होगा तो H निकलना है, carboxylic होगा तो OH निकलना है. No, don't do that. Just understand the method. The method is remove H and OH. That's it. Alright, so I'm just finishing in 5 more minutes, inshallah. So just bear with me. And now we are going to just copy this part. इसी को दोबारा copy कर लेते हैं. Left side से start करते हैं. तो N से start किया था हमने. So N H C C N H C double bond O. काफ़ी बड़ा molecule बन गया. But it's fine. And there you go. Now this one is ester linkage. Oh, sorry, amide linkage. Right? This is amide linkage, and if you want to reverse it, वापस वही method है, acid hydrolysis. And how will you break it down? Break the linkage. So let's suppose in this case I break the linkage from nitrogen. जैसे उसमें ऑक्सीजन से किया था, यहाँ नाइट्रोजन से कर देते हैं. So यहाँ जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ से break कर देते हैं इसको. Okay, so I'm breaking it in the middle of the linkage. So now this is my one monomer part. This is my other monomer part. आपको एक एक part ही चाहिए, पूरे molecule को break करने की ज़रूरत नहीं है. You just need one molecule, one part. Okay, so I take this thing and that gives me this part and this part. Okay, so you just break the linkage. रिवर्स करने के लिए you break the linkage और उसमें H ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, and those are your monomers. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है which is important, that what is the difference in amide and peptide?
So if you notice, if you look at the linkage, तो यहाँ पे मैं linkage को highlight कर रहा हूँ. So on this one, this is the amide linkage, this is the amide linkage, this is the amide linkage. ये सारी amide linkages हैं, ठीक है? NH और COO. This whole thing is amide linkage. Now, the important thing to remember is, अगर left side से just focus on the highlighted part और उसको लिखते जाओ. If I focus on the highlighted part, मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन है, फिर आगे भी नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है. What is happening? NCCN, NCCN. It's reversing. मेरी लिंकेज रिवर्स करती है, रिफ्लेक्ट करती है. If that happens, that is amide. NCCN, NCCN रिवर्स हो रही है, that is amide. अगर रिवर्स ना हो, NC बनता जाए, that is peptide. वो नेचुरली होती है, अमाइनो एसिड्स में होती है. उसमें अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसके एक साइड पे NH2 होता है, एमाइन ग्रुप, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द पेप्टाइड लिंकेज, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट बिट. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स का और एडिशन पॉलीमर्स का डिफरेंस हमने देख चुके हैं. दैट हेयर वी हैव लिंकेज, हेयर वी हैव मल्टीपल मोनोमर्स. उसमें हमारे पास एक ही मोनोमर था और उसमें लिंकेज नहीं थी, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही थी. बट मेथड इज RCJ. What do you remove determines what kind of polymer you get. You remove H and OH, you get condensation. You remove double bond, you get addition. And that's it. Thank you so much for coming. And again, a very happy Ramzan to you guys. If you have any questions, we have the rapid revision WhatsApp group. You can post it in that. If you're taking the past previous session, you can obviously ask questions in the past previous session. This was part of the mock, even the one that we had this weekend as well, and this will be tested in the mock in the next weekend as well. So हमारा हर weekend जो mock हो रहा है, make sure you take it seriously, you practice it. I have seen many students improve, and I'm really happy for you. All right, and yeah, for revision resources, if you need them, just go on to ahmedbokhari.com. I have uploaded material for chemistry. Mainly my subject is chemistry, but I've also uploaded material for physics, chemistry, maths, bio, SAT, all of that. Just go to ahmedbokhari.com and you'll get all of those material for free. Alright, so I'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.